Hello everyone, welcome back to Nucleotides Biology Discuss. Today we have to continue our paper Genetics and this is your lecture number 38. Ajira lecture रे हमें discussion करमा another topic that is the DNA repair mechanism. Okay? DNA repair mechanism माने काना जे हमें जेतेले देखु जो DNA रो जेतेले replication होचे there may be chances of some kind of mistake. But first of to remember the DNA replication is very accurate. DNA replication टा बहुत accurate से सहजे किसी mistake नहीं हुए. But due to certain disorder or due to certain problems there may be chances of inaccuracy in the DNA replication. DNA replication time रे जति किछि inaccuracy हला जति किछि problem हला due to some kind of mutation तो से टाइम रे हमर काना हबार चांसेस होचे डीएनए रे अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस जॉइन हे जबार चांसेस होचे राइट एंड से अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस के केनता करी रिपेयर करा जिबा दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म ओके तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म माने काना जे ड्यू टू म्यूटेशन जदी किछि अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस जदी हमर ऐड हे गला पहले से अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस के हमें केनता करी रिमूव करमा फ्रॉम द डीएनए okay we are not removing this that will be done by the DNA itself DNA निजे तार नाइट्रोजनस बेस जदी अलगाटा लगे दिछे तो निजे तार निजर रिपेयर मेकानिज्म रखिछे सेते के रिपेयर करि परबा डीएनए रे जदी अनयूजुअल थिंग्स लागि जाइछे अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस लागि जाइछे तो से नाइट्रोजनस बेस के से काना करबा रिमूव करबा एंड से जाकर एक्यूरेट नाइट्रोजनस बेस लगाबा दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रिपेयर मेकानिज्म. Okay, so let's discuss about this in more details. What is the DNA repair mechanism? Okay, DNA repair mechanism. DNA repair mechanism. DNA repair mechanism माने काना मैं कहली जे during the time of DNA replication जेतेबेला हमर DNA replication होउचे जदि हमर अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस लागि गला तो सेते के केनता करी रिमूव करा जिबा एंड से जगह रे केनता करी नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस और एक्यूरेट नाइट्रोजनस बेस लगा जिबा दैट इज कॉल्ड एज डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म ओके सो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म माने काना जे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ओके फर्स्ट वी हैव टू नो द डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी एक्यूरेट डीएनए रेप्लिकेशन is very accurate. DNA replication टा बहुत accurate है मतलब 100% that is correct one, right? But due to mutation, there may be chances of some mistake. Okay, but due to mutation, there may be chances of mistake. Okay, for example, if any unusual nitrogenous base is added in the DNA, if any unusual nitrogenous base is added in the DNA जदि हमर अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस टे ऐड हे माने जिन जगह रे जिन नाइट्रोजनस बेस लागबार कथा सही नाइट्रोजनस बेस नै लागे ओके जिन जगह रे जिन न्यूक्लियोटाइड्स लागबार कथा सही न्यूक्लियोटाइड नै लागे बोले से केसर से काना करबा राइट so that this unusual nitrogenous base will be removed and the actual nitrogenous base will be placed there by the DNA itself right so जदि हमर किछि मिस्टेक भी हे गला तो से केसरी in this case the DNA have its own repair mechanism DNA रा तार निजे रिपेयर करबार मेकानिज्म अछि DNA have its own repair mechanism that is called
ताके कहूँ डीएनए रिपेयर मेकानिज्म, दैट इज कॉल्ड डीएनए रिपेयर मेकानिज्म। डीएनए रो निजर रिपेयर करबार मेकानिज्म अछि, राइट। जदि इनएक्यूरेसी हे गला डीएनए रेप्लिकेशन टाइम रे, डीएनए कैन रिमूव दैट अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस एंड इट कैन प्लेस द एक्चुअल नाइट्रोजनस बेस, राइट। इतार माने काना कहला जे डीएनए कैन रिमूव, दैट मीन्स डीएनए कैन रिमूव that unusual nitrogenous base, unusual nitrogenous base, and place the normal nitrogenous base, normal nitrogenous base, okay। से जगह से काना करबा अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस के रिमूव कर दबा एंड से जगह रे काना करबा इट विल प्लेस द नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस। जस्ट वेट, ओके। तो से जगह रे काना करबा नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस के लगे दबा, ओके, अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस के रिमूव कर दबा। तो डिफरेंट वे अछि how to remove that abnormal nitrogenous base and how to place the normal nitrogenous base, the different way अछि, and one of that method we have to discuss here, that is the base excision repair, okay। There are several methods, there are several method to for the DNA repair, for the repair the DNA, डीएनए के रिपेयर करवार लगी बहुत सारा मेथड अच्छे, एंड हियर वी हैव टू डिस्कस वन ऑफ द मेथड, दैट इज द बेस एक्सिजन रिपेयर मेथड। गोटे मेथड बाबद में डिस्कशन करबा, बेस एक्सिजन रिपेयर। बेस एक्सिजन रिपेयर माने का, ओके। बेस एक्सिजन रिपेयर रो माने हला जे इफ एनी अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस if any unusual nitrogenous base, okay, unusual माने का, that is not usual, that means जेन nitrogenous base लगबार कथा सही nitrogenous base is not there, right। unusual nitrogenous base or accurate or inaccurate, sorry, unusual nitrogenous base is placed in DNA, ओके। जदि हमर डीएनए रे गुटे अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस लागि जे, सपोज दिस वन दैट इज आवर डीएनए हला, ओके, एटा हमर डीएनए हला, and this one is running from 5 prime to 3 prime direction, and this one is running from 3 prime to 5 prime direction, and we know that in between the two strands there is presence of hydrogen bonds, these are suppose hydrogen bonds, ओके। एटा हमर डीएनए हला, एंड सपोज हमर जानी छु जे जिन जगह रे मन कर जगह रे एडेनाइन अच्छे, सपोज सब मैं मेंशन नहीं करबा, जदि एडेनाइन अच्छे ऑलवेज एडेनाइन पेयर विथ व्हाट, एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन, सब बेले एडेनाइन टा कार संगे पेयरिंग करसी, एडेनाइन दुईटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करसी कार संगे, थाइमिन संगे, एंड गुआनाइन तीनटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करसी कार संगे, साइटोसिन संगे, दैट इज द नॉर्मल थिंग्स। बट जेतेले डीएनए रेप्लिकेशन होचे से टाइम बेले बाय मिस्टेकली डीएनए पॉलीमरेज काना करिছে, जिन जगह रे थाइमिन लगबार कथा से जगह रे थाइमिन ना लगे करी से जगह रे लगे दिछि यूरासिल, सपोज फॉर एग्जांपल नोचे, सपोज से जगह रे से काना करिছে, जिन जगह रे थाइमिन लगबार कथा थाइमिन ना लगे करी
से जगह से काना करिছে से जगह लगे दिছে सपोज यूरासिल सपोज हियर इट प्लेस द यूरासिल एक्चुअली लगबार कथा काना थायमिन एंड वी नो दैट इन द डीएनए देयर इज एब्सेंस ऑफ यूरासिल डीएनए रे यूरासिल नाही थाए तो इस जगह रे काना कला गुटे अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस लगे देला दिस वन दैट इज द अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस एडेनाइन रो फ्रंट रे सब बोले डीएनए रे काना रहबार कथा थायमिन रहबार कथा बट थायमिन जगह से काना लगे दीचे यूरासिल लगे दीचे इफ यूरासिल is there in front of the adenine then there will be some mistake in the further processing जेतेबेले डीएनए नो आरएनए तयारी हबा आरएनए रो जेतेबेले फिर प्रोटीन सिंथेसिस हबा there will be some kind of problems and we know that in the DNA there is absence of uracil in the DNA there should be presence of what there will be presence of your thymine so that this will be your unusual nitrogenous base इटा के कहमा काम बोली के unusual nitrogenous base इटा सेटा हला हमर unusual nitrogenous base that unusual माने जेंटा नाही हबार कथा सेटा जदी पले आसला राइट तो इ जगह रे हमर यूरासिल गोटे काण है यूरासिल दैट इज पायरिमाइडिन राइट हमें समस्त जानी थिमा जे हमर पाखे नाइट्रोजनस बेस दुईटा टाइप रा अछि नाइट्रोजनस बेस हमें जेतेले देखुतला नाइट्रोजनस बेस हमर पाखे दुईटा टाइप रा अछि गुटे हला प्यूरिन आ गुटे हला पायरिमाइडिन ओके हमें पढ़ी जो आगरु दैट इज इन द +2 सेक्शन रे थिला तमर प्यूरिन अंडर रे जैसी दुईटा नाइट्रोजनस बेस दैट इज योर एडेनाइन एंड जैसी गुआनाइन ओके एंड पायरिमाइडिन अंडर रे जैसी जैसन किन माने दैट इज योर थायमिन साइटोसिन and your uracil okay but here this uracil is present in RNA that is present in RNA whereas the thymine is present in DNA thymine ta kena present is DNA re present is that is the difference DNA re uracil nai tha uracil ta thisi that is the part of your RNA and DNA re thymine thisi and DNA re kana nai tha that is your uracil nai right so here pyrimidine माने pyrimidine under asala किए that is your uracil asala so you know then unusual nitrogenous base asala so unusual nitrogenous base काने that is your pyrimidine here एंत भी ही परी इस जगह में uracil नली इस जगह एक्चुअली थायमिन लगबार कथा बट इस जगह मनकर गुआनाइन लागि गला सपोज मनकर हमें डीएनए रेप्लिकेशन देखु छो डीएनए रेप्लिकेशन टाइम रे लगबार कथा से जगह रे काना दैट्स देयर शुड बी presence of pure thymine रहबार कथा बट से जगह मनकर गुआनाइन लागि गला दैट इज आल्सो नॉट प्रॉपर्ली पेयर तो इ मनकर भीतर प्रॉपर पेयरिंग है नहीं पारे बिकॉज़ ऑलवेज ए पेयर विथ टी जी पेयर विथ सी बट हियर एडेनाइन रो फ्रंट रे काना आसी गला गुआनाइन आसी गला राइट एंड गुआनाइन गोटे काना प्यूरिन गुआनाइन गोटे काना प्यूरिन एंड यूरासिल गोटे काना पायरिमाइडिन ओके जस्ट मैं पायरिमाइडिन के शॉर्ट रे पी वाई लिखली एंड शॉर्ट रे में प्यूरिन के पी यू लिखमी डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस राइट तो इस जगह रे हमर काना लगबार कथा थायमिन लगबार कथा बट थायमिन जगह रे काना लागि छे यूरासिल लागि सपोज और जिन जगह रे थायमिन लगबार कथा से जगह रे काना लागि जाय छे गुआनाइन लागि तो दिस विल बी द अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस दिस विल बी आल्सो कॉल्ड एज अनयूजुअल नाइट्रोजनस कैंसिटा भी कंडीशन आसी पारे ओके मैं एग्जांपल रे नउ छै जदी यूरासिल लागि छै या फिर जन जगह रे थायमिन लगबार कथा से जगह रे गुआनाइन लागि जाय छै दिस विल बी वेरी प्रॉब्लम फॉर द डीएनए ओके ई केस रे काना हबा देखो तो हमको काना करबार के पड़बा ई अनयूजुअल यूरासिल के रिमूव करबार के पड़बा एंड वी हैव टू प्लेस द एक्चुअल नाइट्रोजनस बेस दैट इज योर थायमिन राइट और जदि गुआनाइन लागि छै बेले से जगह गुआनाइन के रिमूव करबार के पड़बा एंड वी हैव टू प्लेस द थायमिन देयर दैट इज द डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म
डीएनए रिपेयर मेकानिज्म मींस बेसिक किछि कॉम्प्लेक्स पार्ट नुहे से जे यूरासिल के बाहर करे करी से जगह हमको प्लेस करबार छै काहे के थायमिन के और जदि गुआनाइन लागि छै गुटे प्यूरिन टे लागि छै तो से जगह रे से गुआनाइन के रिमूव करके से जगह रे प्लेस करबार छै थायमिन के दैट इज द डीएनए रिपेयर मेकानिज्म ओके सो हाउ दिस प्रोसेस इज हैपनिंग दैट इज इन केस ऑफ योर बेस एक्सिजन रिपेयर मेकानिज्म रा में डिस्कशन करमा जा हाउ इट इज गोइंग ऑन केंदे करी हेबा लेट्स सी हियर बेस एक्सिजन रिपेयर मेकानिज्म जते बेले हो से टाइम रे काना हो इतर नोट अमर एवरी अवेलेबल अच्छे ओके तार डिटेल नोट्स में लिखि दै छै बेस एक्सिजन रिपेयर मेकानिज्म सब प्रकार डीएनए रिपेयर मेकानिज्म रो नोट्स ऑलरेडी अच्छे सो दैट डिटेल नोट्स नाइ लिखले भी यू विल गो टू दैट नोट सेक्शन हैंड रिटन नोट्स जन अच्छे से हैंड रिटन नोट्स रो तुमे तार नोट्स ता लिखि परबो ओके तो तुमको जस्ट बुझे दउछा देखो तो काना हुआ देखो suppose this one that is your 5 prime and this one that is your 3 prime this one is your 5 prime this one is your 3 prime and here this should be your adenine but here another nitrogenous base is here that is the uracil is here suppose okay हमर काना अछि uracil अछि तो फर्स्ट काना हुआ देखो at first step रे पहला स्टेप रे गोटे एंजाइम आसबा ओके फर्स्ट स्टेप रे गोटे एंजाइम आसबा तार ना हला ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम क्या ना से एंजाइम रो ना दैट इज योर ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम एट फर्स्ट गोटे एंजाइम आसबा तार ना हला ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम राइट सब बोले मन रखिथिबो कैंसे भी वर्ड रो बैक साइड रे एएससी लागि छि दैट इज द नेम ऑफ ए व्हाट दैट इज द नेम ऑफ ए एंजाइम so first asla glycosylase enzyme so what is the function of this glycosylase enzyme glycosylase enzyme will remove the glycosidic bond it will remove the glycosidic bond kahe ke question right let's see here when we see the nucleotide गोटे हम न्यूक्लियोटाइड हम जितले देखुछु सपोज दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड हला ओके सी 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 कार्बन ओके so this is carbon number 1 this is carbon number 2 this is your carbon number 3 this is your carbon number 4 and here this is your carbon number 5 okay and here this is H this is H O H H O H this is H CH2 O P double bond OH okay and here in the carbon number 1 there will be joining of any type of nitrogenous base that it may be adenine or that may be thymine or that may be uracil or that may be cytosine any kind of nitrogenous base will join at the 5 prime end sorry 1 prime end देखो एक नंबर कार्बन रे के लागि छे नाइट्रोजनस बेस लागि इटा की है नाइट्रोजनस बेस एक नंबर कार्बन रे के लागि छे दैट इज योर नाइट्रोजनस बेस एंड नाइट्रोजनस बेस ओके लेट्स सी हियर हमर इजन स्ट्रक्चर अछि दिस 5 कार्बन स्ट्रक्चर जन दिस 1 2 3 4 5 कार्बन स्ट्रक्चर दैट इज योर सुगर दैट इज द पेंटोज सुगर ओके इटा हमर केन सुगर है पेंटोज सुगर है ओके बट जेतु हमें डीएनए कथा पकई छु तमर हियर इन दिस प्लेस इस जगह हमर काना थिबा एच थिबा दैट मींस दैट इज योर डीऑक्सीराइबोस सुगर इटा हमर केन सुगर है डी ऑक्सी राइबोज सुगर deoxyribose sugar ओके एटा हमर deoxyribose sugar है इस सुगर ता ओके राइबोस deoxyribose sugar संगे नाइट्रोजनस बेस जन जॉइन हिचे बाय ए बॉन्ड इ जगह गुटे बॉन्ड अछि देखो here in this place there is a bond इ जन बॉन्ड अछि this bond is called as a glycosidic bond this bond is called as what glycosidic
Okay, and here the bond is present between this one, that is your phosphate group. DNA रे जतले हमें गोटे न्यूक्लियोटाइड देखुछु, गोटे न्यूक्लियोटाइड रे काना काना थिसे, गोटे फॉस्फेट ग्रुप थिसे, then this one that is your pentose sugar थिसे, and this one that is your nitrogenous base थिसे. Sugar संगे nitrogenous base join थिसे by a bond that is called your glycosidic bond. ये सब किछि तुमको लिखबार नाही ना, मैं जस्ट रिमाइंड कर देबार लगी, जस्ट मैं जगह रे बताली तुमको, राइट. And here this one that is your phosphate group, and phosphate group ta jetale sugar संगे join होचे by a bond that is called your phosphoester bond. Phosphoester bond. ये देखिए क्वेश्चन, phosphoester bond और phosphoester linkage, right. तमोर गोटे एंजाइम आसला, that is your glycosylase enzyme. Glycosylase enzyme will break the glycosidic bond. Okay, ई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के किए ब्रेक करबा, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम. ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम काना करबा, हमर ई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जन अछि, ई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ब्रेक करबा. ई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जदि ब्रेक कर देला, ओके, तमोर किए सेपरेट हे जेबा. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जदि ब्रेक करि गला तबे सेपरेट के हे जेबा, नाइट्रोजन बेस विल बी रिमूव फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड. टोटल स्ट्रक्चर टा न्यूक्लियोटाइड थिला, न्यूक्लियोटाइड रो जदि हमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के रिमूव कर देना, कि रिमूव करबा, दैट इज योर ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, सो दैट व्हाट विल हैपन, द नाइट्रोजनस बेस विल रिमूव. ओके, तो देखो इनो जेतेला मैं देखुतला इ जाके कि आसला ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम. ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम काना करबा, आसिकरी इज एन अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस अछि, इतके काना कर देबा, रिमूव कर देबा जस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड. ओके, डीएनए रे बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड थिसी, तो न्यूक्लियोटाइड रु अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस के काना कर देबा, रिमूव कर देबा, ई पीस के काना कर देबा, बाहर के बाहर कर देबा. ओके, इता के काना कला, बाहर के बाहर कर देला, के बाहर कर देला, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम. तमर एबे काना रहला देखो डीएनए रे, ओके, so this one is your 5 prime 3 prime 5 prime 3 prime. इस अगर रे एबे जे देखमा, देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ नाइट्रोजनस बेस. ओके, मैं बाकी रीजन नहीं देखाबर, दैट मींस इस जगह रे बाकी सब नाइट्रोजनस बेसेस माने अच्छा. ओके, तो इनो जे नाइट्रोजनस बेस थिला से तके के बाहर कर देला, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम तके बाहर कर देला. ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम जदि तके बाहर कर देला, बेले से जगहटा काना रहला, खाली रहला. से जगह जन खाली रहला, ओके, से साइड के कहूछु, इ जगह जन खाली रही गला ताके कहूछु हमें, इ जगह रे के थिला, यूरासिल. यूरासिल गोटे काने पाइरिमाइडिन है, तो जेहेतु यूरासिल खाली हे गला, बेले से तके कहमा काम बोली करी ए पाइरिमाइडिक साइट. काना कहमा तके, this site will be called as a pyrimidine site. इस साइट के कहमा a pyrimidine site और शॉर्ट रे कहमा एपी साइट. देखो ए पाइरिमाइडिन, ए जन से जगह रे वर्ड रे जदि हमर ए लागि छे, दैट मींस ए रो मान हला एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ पाइरिमाइडिन. इस जगह रे गोटे पाइरिमाइडिन रहबार कथा, बट से पाइरिमाइडिन नाइ नो. ओके, सेतिर लागि ताके कहला ए पाइरिमाइडिक साइट बोली करी कहला. ओके, गोटे पाइरिमाइडिन रिमूव हे गला. ओके, सेतिर लागि से साइट के कहला में काम बोली करी ए पाइरिमाइडिक साइट और एपी साइट. जदि प्यूरिन रिमूव होइतिता, गोटे प्यूरिन देथिता से जगह रे, एंड प्यूरिन जदि रिमूव होइतिता ताके कहमा ए प्यूरिक साइट बोली करी कहमा. जदि प्यूरिन रिमूव होइतिता तो ताके कहतिता ए प्यूरिक साइट, राइट. शॉर्ट रे ताके भी एपी साइट बोली करी कहमा. बुझी पारला कहा के कहला एपी साइट. नोट्स रे सब अछि, वी हैव टू सी दिस. जमर ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम रिमूव द नाइट्रोजनस बेस, अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस. ओके, लेट मी राइट हियर. पहला स्टेप रे काना हला देखो, फर्स्ट स्टेप रे in the first step the unusual nitrogenous base
unusual nitrogenous base means short रे nitrogenous base के NB लिखो तो nitrogenous base, right? The unusual nitrogenous base is removed by an enzyme that is glycosylase enzyme. Glycosylase enzyme. Glycosylase enzyme काना कला? It remove the unusual nitrogenous base, right? So that after removal of that nitrogenous base, से site क्या में काना कहमा? Epi site. After removal of the nitrogenous base, after removal of that nitrogenous base, that site will be called as काना कहमा ताके एपी साइट. एपी साइट. ओके, एन एपी साइट माने काना में कहली एप्यूरिक साइट हे पारे और ए पायरिमाइटिक साइट हे पारे. प्यूरिन रिमूव हितले एप्यूरिक साइट, जदि पायरिमाइडिन रिमूव हितबा ताके ए पायरिमाइटिक साइट कोली कहना. बुझि परलो? तापरे नेक्स्ट स्टेप रे काना हबा देखो, से जगह के आसबा अनदर एंजाइम विल कम हियर. आ गोटे एंजाइम आसबा and that enzyme ro na hela epi endonuclease enzyme. Next amor first step re gala glycosylase enzyme. Ebe asba another enzyme that is epi endonuclease enzyme. Okay, epi endonuclease enzyme ro काम कना जे epi endonuclease enzyme will make a cut near the epi site. Epi site पाखा पाखी रीजन रे से काना करबा गोटे कट प्रोवाइड करबा. ओके, इस जगह रे काना दबा गोटे कट दबा, राइट? के कट दबा? एपी एंडोन्यूक्लियस. एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम will make a cut just near the epi site. Okay, so that we are now getting this type of structure. इस जगह रे हमको गोटे मिलला अंत टाइप रो एरिया टे मिलला, गोटे कट टे क्रिएट हला. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप रे काना हला, लेट मी राइट हियर. नेक्स्ट स्टेप रे काना हला, नेक्स्ट सेकंड स्टेप रे एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. एपी एंडोन्यूक्लियस माने काना? एपी साइड रे गोटे न्यूक्लियस एंजाइम भीतर साइड रे काटु छे. देखो, एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम make a cut near the epi site of DNA. देखो, एंजाइम मन को ना बहुत सिंपल है, मन रखबटा. एंडोन्यूक्लियस वर्ड असला एंडोन्यूक्लियस. एंडोन्यूक्लियस माने काना? देखो, न्यूक्लियस गोटे एंजाइम that cut the nucleic acid. जेन एंजाइम ता न्यूक्लिक एसिड के कट दबा ताके कहसु न्यूक्लियस. न्यूक्लिक एसिड गुटे जगह रे डीएनए गुटे न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. जेहेतु डीएनए के कट दबा, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस एंजाइम. न्यूक्लिक एसिड हमें दुईटा टाइप रे जानि छ, गुटे डीएनए गुटे आरएनए. डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आ गुटे हला राइबो न्यूक्लिक एसिड. इ जगह रे के कट दउछ? गुटे न्यूक्लियस एंजाइम कट दउछ. बट न्यूक्लियस एंजाइम केन जगह रे कट दउछ? इट मेक ए कट जस्ट इनर पार्ट ऑफ द डीएनए. बाहर साइड रे कट दउछ ना भीतर पार्ट रे कट दउछ. भीतर पार्ट रे कट दउछ. एंड भीतर पार्ट रे लागि वर्ड यूज करसु हमें काम बोली कि दैट इज योर एंडो. एंडो माने हला इनर पार्ट. जेतु भीतर साइड रे गुटे न्यूक्लिक एसिड को कट दउछ एंजाइम, सेते लागि तार ना हला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. But this endonuclease enzyme make the cut near the epi side, सेते लागि ताके कहला एपी एंडोन्यूक्लियस बोली कि कहला. वेरी सिंपल, राइट? तो गुटे असला एंजाइम एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम that make it cut near the epi site of the DNA, right?
एपी साइड रो पाखा पाखी गुटे कट टे हला तापरे यादे आसपा वन ऑफ द इंपोर्टेंट एंजाइम दैट इज डीएनए पॉलीमेरेज 1 एबे आसबा डीएनए पॉलीमेरेज 1 एंजाइम okay this is the master enzyme for the DNA repair question aswa simply which enzyme is the important enzyme for the DNA repair mechanism that is the DNA polymerase 1 we know that DNA polymerase 1 DNA polymerase 2 DNA polymerase 3 different varieties or different types of DNA polymerase are there okay but question see which enzyme helps in the DNA repair that is the DNA polymerase 1 but deoxyribonucleotide मान को join किए करसी that is a DNA polymerase third but unusual nitrogenous base जदि लागि जाइथिबा और unusual nucleotides जदि लागि जाइथिबा से unusual nucleotides के unusual nitrogenous base के remove करबा एंड से जगह actual nucleotides के place कराबर काम हला that is the DNA polymerase 1 रका तो DNA polymerase 1 काना करसी देखो DNA polymerase 1 रो दुईटा काम अछि DNA polymerase 1 रो दुईटा काम अछि दुईटा काम करसी DNA polymerase 1 that is the master enzyme for the DNA repair mechanism दुईटा काम अछि गुटे हला that is the exonuclease activity गुटे हला exonuclease activity okay and another one that is the polymerase activity polymerase activity দুইটা activity আছে গোটে exonuclease activity গোটে হলা exonuclease activity and another one that is polymerase activity exonuclease activity माने काना it will remove the nucleotides remove the nucleotides okay देखो exo माने काना exit exo इस जगह रे exit कराबा okay कहा के exit कराबा न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स मन को जेतो न्यूक्लियोटाइड्स मन को रिमूव करो से एग्जिट करो से सतिर लगी ताके कोचो एक्सोन्यूक्लिक एक्टिविटी दैट इज टू रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स बट केन डायरेक्शन रे रिमूव करबा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन रे से न्यूक्लियोटाइड्स मन को रिमूव करबा बुझी बल्लो एंड जॉइनिंग भी करबा पॉलीमराइजेशन माने का पॉलीमरेज माने का द एंजाइम दैट हेल्प्स इन द पॉलीमराइजेशन माने का पॉलीमर फॉर्मेशन करबा के कहसु कार पॉलीमर बनाबा जे मोर जे न्यूक्लियोटाइड्स माने थिला किछि न्यूक्लियोटाइड्स के पहला रिमूव कर देबा एन से जगह रे नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स मान को जॉइन कराबा जॉइनिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड यदि जॉइन हला तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बनबा ना बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जॉइन हला पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के हमें काना क्वेश्चन दैट इज द डीएनए और न्यूक्लिक एसिड बोली के क्वेश्चन तो पॉलीमरेज एक्टिविटी माने काना it will join the nucleotides okay but ये काम ता करसी किन डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ओके गुटे डायरेक्शन रे काना करूछ न्यूक्लियोटाइड्स मान को रिमूव करूछ एंड आ गुटे डायरेक्शन रे काना करूछ न्यूक्लियोटाइड्स मान को जॉइन करूछ दैट इज कॉल्ड एज व्हाट दैट इज having dual role during the time of your DNA repair mechanism. Exonuclease activity, it will remove the unusual nitrogenous bases or unusual nucleotides. Then as well polymerase activity, that means it will join the actual or normal nucleotides. Okay, दुहीटा काम करूछ तो काना हबा देखो इस जगह से काना करबा एटा मोर this one एटा जदी 5 प्राइम हला ये एंड के कामा 3 प्राइम एंड this one is your 5 प्राइम राइट जगह कटते ही ओके ई रीजन के जदी हमें देखमा काना थिबा ई रीजन रे
मी रीजन के टिके बड़ करे देखो जे तुम काना थिबा न्यूक्लियोटाइड्स माने थिबे जगह रे तो ई जगह रे देखमा सपोज दिस रीजन एउटा न्यूक्लियोटाइड थिबा ओके इन गैप टे रहला न्यूक्लियोटाइड्स माने जॉइन हिच एंड न्यूक्लियोटाइड्स माने जतले जॉइन हेतिस हमर इनो काना थे सेटा এটা 1 নম্বর এটা 2 নম্বর এটা 3 নম্বর এটা 4 নম্বর সরি উল্টি গলা এটা হলো 1 2 3 4 এন্ড ইনো 5 নম্বরটা থিসি এন্ড ইনো লাগি থিসি ফসফেট গ্রুপ রাইট দেন ইনো इतर फॉस्फेट ग्रुपटा के पतला कर इतर फॉस्फेट ग्रुपटा इतर इनो जॉइन हेतिसी देन इतर फॉस्फेट ग्रुपटा इतर इनो जॉइन हेतिसी राइट and here there will be your nitrogenous bases जहाँ भी अच्छे क्लियर तो हमर नो मैं केन जाए के देखो जाइटा एतकी रीजन के देखो दिस रीजन ओके ई रीजन के मैं बॉर्ड करके देखो छु दिस इज जस्ट लुकिंग लाइक दिस तो इटा हमर केन एंड हला ई जगह इटा 1 1 2 3 4 and here that is your 5 तीन नंबर अच्छे तीन नंबर कार्बन रे काना लागिथिबा OH ग्रुप लागिथिबा ओके एंड इतर 5 नंबर रे लागि छिटा काना फॉस्फेट ग्रुप लागि तो इनु काना हबा एबे असबा इनके के डीएनए पॉलीमरेज 1 डीएनए पॉलीमरेज 1 आसिकरी इनु काना करबा डीएनए पॉलीमरेज 1 आसिकरी इस जगह रे काना करबा इटा मोर 3 प्राइम एंड ओके एंड इटा इतर काना 5 नंबर कार्बन रे लागि थिबा राइट बॉर्ड करी देखो ओके आई थिंक यहाँ दे क्लियर दिसु इतर हमर जन 3 प्राइम एंड अछि इ 3 प्राइम एंड रु इ जगह रे काना करबा इट विल मेक ए कट हियर इ जगह रे काना दबा गोटे कट दबा बॉडी बने गया इ जगह रे काना दबा गोटे कट दबा केन डायरेक्शन रे कट दउ छी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन रे काना देला गोटे कट देला राइट तो कट दबर द्वारा इ न्यूक्लियोटाइड टा काना बा बाहरी आसबा ओके न्यूक्लियोटाइड टा काना करबा एबे बाहरी आसबा ओके बुझी परलो तापरे काना करबा फिर इ जगह रे गोटे कट प्रोवाइड करबा इ जगह रे गोटे कट प्रोवाइड करबा सो दैट इ न्यूक्लियोटाइड भी काना करबा बाहर के बाहरी आसबा इनो जन न्यूक्लियोटाइड लागि थिला इ न्यूक्लियोटाइड टा भी काना करबा बाहर के बाहरी आसबा बुझी परलो तो न्यूक्लियोटाइड्स मन को बाहर के बाहर कराबा किछिटा न्यूक्लियोटाइड्स के से एपी रीजन पाखापाखी एपी साइड पाखापाखी किछि न्यूक्लियोटाइड्स के बाहर कर देबा बाहर करे देई करी तापर एक्चुअल न्यूक्लियोटाइड्स जेंटा लगबार कथा तापर लगाते जेबा ओके इमन को सपोज बाहर के बाहर करे देला किछिटा न्यूक्लियोटाइड्स के बाहर कर देला साइमल्टेनियसली कामटा चालुथबा मैं जस्ट खाली बताबर लगे कहू से एतकी न्यूक्लियोटाइड्स के सपोज से काना कला बाहर कर देला ओके जस्ट वेट ये के न्यूक्लियोटाइड के बाहर कर देला दुईटा के सपोज बाहर गला न्यूक्लियोटाइड्स बाहर गला परे नेक्स्ट तार काम हला न्यूक्लियोटाइड्स मान को रिमूव भी करावा जॉइन भी करावा नवा न्यूक्लियोटाइड्स के एंड इस जगह रे हमर काना दरकार थिला इस जगह रे हमर दरकार थिला थायमिन दरकार थिला ना तो इस जगह रे एक्चुअल न्यूक्लियोटाइड्स के जॉइन करावा ओके इस जगह रे थायमिन दरकार थिला दिस वन दैट इज द इंपोर्टेंट वन थायमिन दरकार थिला से जगह रे कहा के न्यूक्लियोटाइड्स के जॉइन कराबा थायमिन वाला न्यूक्लियोटाइड्स के एंड इतर केते नंबर कार्बन थेसी न 5 नंबर इन काना थेसी फॉस्फेट ग्रुप थेसी एंड इता के इतर संगे जॉइन कराबा राइट तो इस जगह रे काना करबा इतर संगे जॉइन कराबा
किन डायरेक्शन रे जॉइन करावा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन रे नुआ न्यूक्लियोटाइड जॉइन करावा राइट एंड हियर फिर 3 प्राइम रहला फिर गुटे नुआ न्यूक्लियोटाइड्स के अनवा ई जगह के ओके एंड इटा इधर 5 नंबर कार्बन रे फॉस्फेट ग्रुप लागी थिबा देन इता के इतर संगे जॉइन करावा केन डायरेक्शन रे जॉइन करावा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन रे फिर अनदर न्यूक्लियोटाइड एक्चुअल नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड से जाए के आने के जॉइन करावा केन डायरेक्शन रे 5 नंबर कार्बन रे फॉस्फेट लागी छे इधर 3 नंबर कार्बन रे OH ग्रुप लागी छे इता के 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन रे नुआ न्यूक्लियोटाइड्स मन को जॉइन कराते चलबा ओके सो दैट नुआ न्यूक्लियोटाइड्स मन को ई जगह रे आसे करी जॉइन कराला जेनटा जेन जगह रे लागबार कथा ओके जेनटा जेन जगह रे लागबार कथा जेन एक्चुअल न्यूक्लियोटाइड्स मन लागबार कथा सेही न्यूक्लियोटाइड्स मन को आने करी जॉइन करू किन डायरेक्शन रे जॉइन करू 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन हियर दिस इज डन बाय द डीएनए पॉलीमरेज 1 डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव किन डायरेक्शन रे कराला 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन रे एतके डिटेलिंग तुमको किछ करबार ना जस्ट वी हैव टू राइट दिस पर मैं तुमको बुझाबार लागि कहि देली जे it will remove the nucleotides in 3 prime to 5 prime direction and it will join the new nucleotides in 5 prime to 3 prime direction right देखो ई जगह रे हमें गुटे डायग्राम रे कंप्लीट कर दमा इटा ई जगह रे काना थिला गैप आसे गला ओके दिस वन दैट इज योर 5 प्राइम तो किछटा रिमूव कर दला न्यूक्लियोटाइड्स मन किछि डिस्टेंस तक रिमूव कर दला देन काना कला से जगह रे नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स जेंटा दरकार सेरा लगे दला से जगह रे ओके ई जगह रे सपोज नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स लागला दिस आर द नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स देन समान कर भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन राइट ई जगहटा दिस वन रिपेयर है छे दिस वन दैट इज द रिपेयर साइट ओके ई जगहटा हमर काना है छे रिपेयर है छे जेन जगह रे जेंटा लागबार कथा हमर प्रॉब्लम टा केन जगह रे थिला हमर प्रॉब्लम टा थिला ई जगह रे ओके हियर ई जगह रे लागबार कथा टी एबे लगा दला टी बट से जितले रिपेयर करू पूरा सही साइड के खाली रिपेयर नहीं करबार से केन साइड के रिपेयर करू पूरा हे पाखा पाखी किछि रीजन के ओके दैट मींस से जगह रे से रिमूव कर देला पहला से अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस के पहला के रिमूव कर देला ग्लाइकोसाइलेज तापरे एपिन्यूक्लियो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आसिकरी जगह गुटे कट प्रोवाइड कर देला ओके तापरे से जगह रो से काना करते लगला एतके किछि रीजन के से काना कर देला पहला कट कर देला एतके रीजन के डीएनए पॉलीमरेज 1 एतके रीजन के कट कर देला एंड कट कर देकरी से जगह रे नोआ न्यूक्लियोटाइड्स मान को आनिकरी काना कला जॉइन कराला बट लास्ट के देखमा जदी इ जगह रे हमर काना हबार चांसेस होसे टिके स्लाइटली गैप हबार चांसेस होसे देखो इना जितले देखुतला इ जगह रे जेन गैप रहला दैट मीन्स इस जगह रे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हेने पारी तो इस जगह रे जॉइनिंग कराबार लगे आउट एंजाइम आसबा दैट इज लाइगेज एंजाइम सब बेले मन रखिथिबो लाइगेज एंजाइम काना करबा कैंस भी जगह रे डीएनए रे जति भीतर गैप रहि गला माने दुटा न्यूक्लियोटाइड भीतर जति फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हेसी दुटा न्यूक्लियोटाइड भीतर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हेसी इटा में फोर्थ सेमेस्टर रे पढमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन डिटेल्स काना फॉस्फोडाइस्टर काना फॉस्फोइस्टर काना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज सब पढमा ओके जस्ट जेहेतु जेनेटिक्स रे थोड़ा दे दीची जस्ट वी हैव टू नो दिस स्लाइटली हमको जानबार अछि क्लियर तो हमर इनो काना हल्ला देखो लाइगेज एंजाइम काना करबा जन गैप रह जितबा जदी ई जगह रे भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन नाही थिबा तो ई जगह रे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करबा के दैट इज लाइगेज तो लाइगेज एंजाइम रो काम हल्ला जे जगह रे लाइगेज एंजाइम आसे करी लास्ट न्यूक्लियोटाइड मान को जॉइन कराबा लास्ट स्टेप ओके तो ये रीजन टोटल काना हेगला रिपेयर हेगला जिन जगह रे जेन न्यूक्लियोटाइड्स लागबार कथा सही न्यूक्लियोटाइड्स इज देयर तो इटा के कहना बेस एक्सिजन रिपेयर व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेस एक्सिजन रिपेयर बिकॉज़ इस जगह रे गुटे बेस के एक्सिट करा गला एक्सिजन माने कट करि के रिमूव करबा टाइ कोस एक्सिजन कहा के कट करा गला गुटे बेस के गुटे नाइट्रोजनस बेस के कट करि के रिमूव कर दिया गला और से जगह रे नोआ न्यूक्लियोटाइड्स प्लेस करा गला केंदा के प्लेस करा गला दिस इज द मैकेनिज्म That's why this is called as base excision repair mechanism. गोटे बेस के पहले एक्सिजन करा गला एक्सिजन माने रिमूवल करा गला के रिमूव कला ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम तापरे एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आसला से जगह रे गोटे कट प्रोवाइड कला
ओके से जस्ट कट ते दे देला देन आसला के डीएनए पॉलीमरेज 1 इन किछि पार्ट के रिमूव कर देला डीएनए रो किछि न्यूक्लियोटाइड्स के रिमूव कर देला देन फिर स्टार्ट कला काना नुआ न्यूक्लियोटाइड्स मान कर जॉइनिंग करा एंड वी आर नाउ गेटिंग द न्यू डीएनए और दिस इज योर रिपेयर डीएनए ये डीएनए टा रिपेयर हिसाला एंड दिस वन दैट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक नाउ बुझी परलो एडा के कहला दैट इज योर बेस एक्सिजन रिपेयर मैकेनिज्म तो हमें लिखुतला the second step रे endonuclease enzyme make a cut near the epi-site of the DNA तापरे कि आसला DNA polymerase 1 आसला ओके तो थर्ड स्टेप रे आसला DNA polymerase 1 देखो इजन डिस्कशन करूछु आजर टॉपिक दिस इज डायग्राम बेस्ड टॉपिक हमको डायग्राम केंदा काटिछु तार ऊपर डिपेंड करू डायग्राम जति हम ठीक से बते देइछु तो काना लिखिछो और एग्जामिनर खातार सुधला टाइम रे नाही देखि ओके वी हैव टू रिमेंबर दिस जे वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपर्ली काटि देइछु काना लिखिछु दैट डज नॉट मैटर तापर बट वी हैव टू राइट दिस ओके वी हैव टू राइट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द स्टेप्स बहुत कम हबा बट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंप्रेसिव टॉपिक राइट so that I am discussing here तो काना कला थर्ड स्टेप रे काना कला थर्ड स्टेप रे DNA polymerase 1 will remove some nucleotides from the epi-site in 3' to 5' direction 3' to 5' direction रे remove करवा then add the normal nucleotides in 5' to 3' direction ओके किछि न्यूक्लियोटाइड के रिमूव कला 3' to 5' डायरेक्शन रे इटा के काना कहसु एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इटा के कहसु एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड इटा के कहसु हमें काम लिखरी पॉलीमरेज एक्टिविटी ओके एट लास्ट हमर की आसबा ligase enzyme at last ligase enzyme will join the last nucleotides माने last site रे जन थिला ताके कोजन last nucleotides and now the DNA is repaired एबे डीएनए टा काना हे जे छे रिपेयर ही जाय छे ओके तो इडा हला डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म बहुत सिंपल कांसेप्ट है किछि नाइ नो इनो बेस एक्सिजन रिपेयर रे ओके ओवरऑल मी कह दो छ देखो काना हला बेस एक्सिजन रिपेयर रे गुटे अनयूजुअल बेस लागितला हम एग्जांपल लाला ई जगह रे यूरासिल के रिमूव करला के गुटे एंजाइम दैट इज द ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम जेतु ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ब्रेक कर से सतिर लगे ताकि हमें कहना ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम बोली करी कहना देन से जगह के कहला एपी-साइट ए प्यूरिक साइट और ए पाइरिमाइडिक साइट जेतु ई जगह रे पाइरिमाइडिन रिमूव हला ए पाइरिमाइडिक साइट बोली करी कहना बस शॉर्ट रे कहना ताकि एपी-साइट जदि से जगह रे कैंसी गुटे अनयूजुअल प्यूरिन लागि जायतिता से ताकि रिमूव करतिता तो ताकि कहतिता काम बोली करी ए प्यूरिक साइट राइट एपी-साइट कहला देन असला एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम विल मेक ए कट देयर से जगह गुटे कट प्रोवाइड कला माने काना से जगह फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के ही ब्रेक करै छै मन रखितो केन बॉन्ड के ब्रेक करै छै दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के ही ब्रेक करै छै फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा के कहसु जे दुईटा न्यूक्लियोटाइड भितर जन बॉन्ड थिसे ताके कहसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोली के कहा जाय राइट एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट प्रोवाइड कला पर नेक्स्ट असला डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 रो दुईटा काम जे से जगह किछि पार्ट के रिमूव कर देला न्यूक्लियोटाइड्स के केन डायरेक्शन रे रिमूव करबा 3' to 5' डायरेक्शन
एंड से जगह 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन रे फिर काना कर देला नोआ न्यूक्लियोटाइड्स बट केन न्यूक्लियोटाइड जन करला दैट इज द नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स जिन न्यूक्लियोटाइड जिन जगह रे लागबार कथा सही न्यूक्लियोटाइड्स मन को जॉइन कर देला एंड एट लास्ट दुही साइड दुही एंड के जॉइन कराबा लेके असला लाइगेज एंजाइम एंड आफ्टर दैट द डीएनए इज रिपेयर ओके सो दिस इज योर वेरी सिंपल concept I think a bit simple लागो तो तुमको मन को बेसिक किसी complication नहीं ना if any doubt you can write to us our chat box is open for all of you thank you we will discuss another method of DNA repair mechanism in the next